Today's models of success will be presented in Urdu and English, with subtitles in Arabic, Alexis or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Thai, Urdu and Spanish. खुश मिजाज नाजरीन, प्रोग्राम कामयाबी के नमूने में खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान के मेजर मोहम्मद अब्बास के कुछ कारनामों का तज़किरा करेंगे जिन्होंने इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी और वो अपने खैराती कामों की वजह से जाने जाते थे। वो खुशकिस्मत लोग जो मेजर अब्बास से वाकिफ़ थे वो इन्हें प्यार से मेजर अब्बास या सिर्फ़ अंकल कहकर पुकारते थे। मेजर अब्बास ने मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए बहुत काम किया, यहाँ तक कि 77 साल की उम्र में भी उन्होंने 10,500 फुट की बुलंदी से छलांग लगाई एक फलाही मंसूबे के लिए चंदा इकट्ठा करने की खातिर, जिसका मकसद कम सिनी की मुशक्क़त की रोकथाम था। सिब्त क्यू नकवी, जो कि टोरंटो में मुस्लिम फलाही मरकज़ के मुंतज़िम आला हैं, इन्हें मेजर अब्बास को ज़ाती तौर पर जानने का शर्फ हासिल है। One time I sit down with him and he was telling me that he walked over 10,000 kilometers for various charities, locally in Canada, in UK and in some Middle East, to raise fund for various charities, international and local. मेजर अब्बास ने ये खैराती काम 1986 से शुरू किए। वो तंजीमें जो मेजर अब्बास की रहमदिली से मुस्तफ़ीद हुईं, इनमें यूनिसेफ, बैनुल-अक़वामी इस्लामी हस्पताल, कनाडा की आर्थराइटिस सोसाइटी, अस्काते हमल की रोकथाम की सोसाइटी, BBC का ज़रूरतमंद बच्चों की इमदाद का मंसूबा, कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और मुहिब्बान पाकिस्तान शामिल हैं। 1987 में उन्होंने जज़ीरा नुमा अरब से होते हुए मक्का और मदीना तक का 2500 किलोमीटर लंबा पैदल सफ़र तय किया खैरात और हज करने के लिए, और जदीद दौर में वो ऐसा काम करने वाले पहले शख्स माने जाते हैं। When he got there in Makkah, he went straight to hospital to give blood. Many people told him that why don't you go for some prayer in the mosque, because most Muslim goes to Saudi Arabia, especially to Makkah, to perform pilgrimage, and which we call Hajj. So many people advised him to go first there. So he said, no, I'm here to help a hospital, I'm here to raise money for hospital, so this is my responsibility to go and give blood. I'm toiling and sweating to help people. So that was his vision, to help the less fortunate people, which was really inspired me. मेजर अब्बास नेक मकासद वाले इंसान थे जिन्होंने अपने अच्छे इरादों को अमली जामा पहनाया। He said that people pay zakat on their wealth, but I don't have wealth, so I pay zakat on my health. God gave me good health, so I just help people. मेजर अब्बास के बेटे मोहम्मद इकबाल अली मुस्लिम फलाही मरकज़ के मौजूदा मुंतज़िम आला हैं। अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलकर इन्हें पता चला कि इनके वालिद मोहतरम की बेलौस काविशों के पीछे कौन सी क़ुव्वत कार फरमा थी। In his beliefs, he was a very strong Muslim, but he believed that we have to demonstrate Islam. I mean, that's what I got out of him. He said just talking about Islam and the morals and all that of Islam is not enough. You have to actually live and show to the world that it's a very kind and compassionate religion. It is how you interact with humanity. And that's why he selected this motto from the Quran to be the motto for the organization: service to humanity, service to Allah, not service to Muslims or service to Islam. That was the message of the Prophet Muhammad. अपने ख़ानदान के ताउन और भरपूर प्यार की बदौलत मेजर मोहम्मद अब्बास अपने खैराती काम दिलजमी से पूरे करते रहे। इनकी अहलिया मोहतरमा सरवर अब्बास ने ख़ास तौर पर इनके नेक काम की हौसला अफजाई की। How does it feel to be a granddaughter of such a great personality like Muhammad Abbas Ali? It's pretty good. You learn a lot of things from him. So when you go to school, what do your friends say about Uncle?
as he's so favorably called? They're like, wow, you had like the coolest grandpa ever, because he did so much stuff, right? Yeah. Like no one ever heard of a grandpa skydiving or something like that yet. What about his wife, your grandmother? Yeah, I think that she's just as amazing. If it wasn't for her, I don't think this would be here right now. Okay. And it wouldn't have been such a big success if it didn't work together. Well, yeah, she supported him like all the time. 1993 में मेजर अब्बास ने टोरंटो में मुस्लिम फलाही मरकज़ की बुनियाद रखी इस मकसद के लिए ताकि बदकिस्मत अफराद की बराह रास्त मदद की जा सके. The idea to start something, very little, very basic, to give a person who is needy some grocery could help that person at least for a week or for a month. They started with the food bank in Toronto, and then slowly it grew up. From food bank we have also over 6,000 families registered with food bank. We have 3 branches of halal food bank in Toronto, Mississauga and Whitby. नाजरीन, देखते रहिए सुप्रीम मास्टर टेलीविज़न. प्रोग्राम कामयाबी के नमूने पर हम वापस आएंगे खुदा तर्स मेजर अब्बास अली के कुछ कारनामों पर मज़ीद तबसरा करने के लिए. He was a person that anybody met him get inspired immediately. Yeah, he was just a fantastic person. He lived a very fulfilling life, I think. He did a lot of stuff that I wish maybe I can do someday too. Like all the long walks that he did. He walked all the way in the desert, the skydiving, that type of stuff. मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम कामयाबी के नमूने में खुश आमदीद. हम बात कर रहे हैं मेजर मोहम्मद अब्बास अली का, जिनका शुमार पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात में होता है और वो कनाडा में मौजूद मुस्लिम फलाही मरकज़ के बानी हैं. 1995 में मुस्लिम फलाही मरकज़ की बुनियाद रखने के 2 साल बाद मेजर अब्बास ने ज़रूरतमंद औरतों और बच्चों के लिए मुस्लिम फलाही मरकज़ कायम किया. ये दोनों खिदमात शुमाली अमरीका में अपनी नौइयत की पहली शुमार की गईं. ये दोनों खिदमात हर ज़रूरतमंद के लिए दस्तयाब थीं, क़ताए नज़र इससे कि किसी का मज़हब या उसकी कौमियत क्या है. We open a women's shelter in Whitby, which is east of Toronto. It's a 40-bed facility and operate 24 hours, 7 days a week, helping homeless and abused women with their children. And since last 13 years, we are operating that women's shelter, which had helped 6,000 families. Then we have other projects like Meals on Wheel project, which is operating since last almost 10 years now. It's a weekly project and it's a volunteer-based project. We prepare 350 lunch bags every Saturday, and then our volunteer take it to downtown Toronto area to distribute to homeless people sitting on the street. So that was his idea to help everybody. We recently opened a free clinic here in Toronto. बतौर बानी और सदर मुस्लिम फलाही मरकज़ के मेजर अब्बास कैसे थे? बेशक बहुत से लोग मेजर अब्बास की मुस्तकिल मिजाजी और उनकी खुली सोच से मुतासिर हैं. He would have fun with them, take them out, play with them, cricket or whatever. And he said, and he believed and would always say, the youth are the future. You have to really take care that they are given the right spirit and the right guidance to provide the backbone for our community. He'd always encourage you to be involved with the community, to be involved with charitable works. He'd always say that you got to start when you're young. You can't just start when you're older, right? So you have to lay the foundation when you're younger. And so I really took that to heart, and I want to do that. That's what impressed me most. He was an impartial person, didn't believe in boundaries like religions and colors and caste and nationalities. He was a true servant of humanity. सालों पर मुहीत मेजर अब्बास की काबिल कदर कोशिशों ने इन्हें कई एजाज़ात बख्शे,
जिसमें आउटस्टैंडिंग एशियन कैनेडियन कम्युनिटी अवार्ड, कमेंडेशन एंड कमिटमेंट टू वॉलंटियरिज्म जो इन्हें इज़्ज़त माब माइकल डी हैरिस ने नवाजा, प्रीमियर ऑफ टोरंटो और इज़्ज़त माब मलिका एलिज़ाबेथ दोम की तरफ से गोल्डन जुबली अवार्ड भी शामिल हैं। The legacy he has left behind, very hopeful legacy. मेजर अब्बास के शुरू किए गए नेक काम इनके इदारों के ज़रिए इन्हीं के नाम पर जारी हैं। मुस्लिम फलाही मरकज़ पाकिस्तान में 4 मुकामात पर मुफ्त तबी मराकज़ और तालीमी मंसूबों के ज़रिए अपने बानी की सोच के मुताबिक काम कर रहा है। We provide free books, stationery, uniform, shoes, and plus we give incentive as a grocery to those children's family so that they don't stop children coming to school. There are 650 students going to these schools which have been subsidized from here. $1 here is not much amount, but that when you convert into local money there, it's something, you know. So that help a lot. ये मुस्लिम फलाही मरकज़ पाकिस्तान के खुश्क और सहराई इलाकों में पानी की तलाश के मंसूबों के लिए भी मदद फराहम करता है। We dig well for remote villages in that desert region, and so far we have already provided consumable water by digging well in those villages, about 17 of them. And it's a continuing project. When people pledge, it's cost only $2,500 to bear the cost of digging one well. मेजर अब्बास के मकसद के ऐन मुताबिक मुस्लिम फलाही मरकज़ के अरकान तमाम पस मंज़र वाले मुस्तहिक अफराद की आफात के इमदादी कामों में मदद के लिए सरगर्म हैं। We have disaster relief project wherever there's some disaster around the world, like there was a tsunami in Indonesia, then there was an earthquake in Kashmir, there was Katrina, there was earthquake in Iran. So we raise money here and also send some relief goods to those countries to help people. अपने इदारे के जारी खैराती कामों की बदौलत मेजर अब्बास का जज्बा रहम और मोहब्बत दूसरे लोगों के लिए एक अबदी और हकीकी रिवायत है। He was a true human being with all the qualities you would like to see in a perfect human being who understood the purpose of his creation. He always believed in equity of human beings, in the equality of resources, and he made his lifelong goal to serve the humanity. हम मेजर अब्बास के ख़ानदान और मुस्लिम फलाही मरकज़ के अमले की तमाम मेहरबानियों की कदर करते हैं जिन्होंने मेजर अब्बास के तजुर्बात और गैर मामूली खूबियों को हमारे साथ बांटा। खुदा करे कि इनकी नेक दिली और बेलौस खिदमत का सिलसिला चलता रहे और एक दरख्शां मिसाल बने एक बेहतरीन और ख्याल करने वाले मुआशरे के लिए। काबिल कद्र नाजरीन, हमारे प्रोग्राम कामयाबी के नमूने में शामिल होने का शुक्रिया। हमारा अगला प्रोग्राम है सब्ज़ी खोरी ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका, काबिल गौर ख़बरों के फ़ौरन बाद सुप्रीम मास्टर टेलीविज़न पर। तारीफ़ है आसमानी रोशनी और अच्छाई की जो सब लोगों में है। Splendid viewers, thank you for joining us today on Models of Success. Up next is Vegetarianism, the Noble Way of Living, right after noteworthy news here on Supreme Master Television. Praised be the divine light and inherent goodness in all people. To find out more about the Muslim Welfare Center, please visit www.muslimwelfarecenter.com. For more details, please visit www.suprememastertv.com/MOS.